Hello everyone, welcome back. In this video, I will be explaining about relation of electronic configuration with modern periodic table. That is how electronic configuration differs in modern periodic table in a group or in a period. Now check my previous video of modern periodic table for features of modern periodic table, and also you'll find the types of element and different blocks, that is S block, P block, D block and F block. Also check Dobereiner's triad, Newlands law of octave and Mendeleev's periodic table. Uh, all the links are given below in the description. And don't forget to subscribe. So let us continue. Now, in this class, we'll understand electronic configuration of element and modern periodic table. So, electronic configuration क्या है और वो modern periodic table से कैसे related है वो भी हम समझते हैं. Now, the characteristic of the group and period in the modern periodic table are because of the electronic configuration of element. तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. जैसे कि अगर एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे एंड दोज आर कॉल्ड मेटल्स. तो मतलब जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो डिपेंड हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. It is the electronic configuration of an element which decides the group and the period in which it has to be placed. So electronic configuration also decides the position of element in modern periodic table. कैसे वो समझेंगे. Now group number is given as the number of valence electron. मतलब अगर हमको पता करना है कि कोई भी एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा तो हमें उसका ग्रुप नंबर पता होना चाहिए और उसका पीरियड नंबर पता होना चाहिए. ग्रुप नंबर वी कैन राइट by looking at the number of valence electron. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो ग्रुप 1 में होगा, 2 है तो वो ग्रुप 2 में प्लेस किया जाएगा. बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है देन वी विल हैव टू ऐड 10. मतलब if valence electron is 2 then group 2, but if valence electron is 3 we'll add 10, that is it will become 13. तो जो ग्रुप नंबर हो जाएगा वो 13 हो जाएगा. अब ये जो रूल है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर फर्स्ट 3 periods. Okay, so group number is equal to number of valence electron. Period number is equal to number of shells. Example ले लेते हैं. Example सोडियम. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1. अब 2,8,1 3 शेल्स है तो इसका पीरियड नंबर होगा 3 एंड इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसको ग्रुप में प्लेस करेंगे, दैट इज ग्रुप 1. So what is the position of sodium? Position of sodium is group 1 and period 3. So you can see here group 1 and period 3. This particular is the position of sodium. Let us take one more example and understand. Example carbon. अब carbon का electronic configuration है 2,4. अब क्योंकि इसके पास 2 shells है तो इसका period number होगा 2, बट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है. हमने देखा था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हुआ तो 10 ऐड करेंगे. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि लिए ये 4 है तो जो ग्रुप नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू 14. तो यू कैन सी हियर कार्बन का जो पोजीशन है वो है ग्रुप 14 and period 2. So this is how this particular electronic configuration help us to identify the position of element in modern periodic table. Properties of elements in groups and periods. Now, various property of element in a group show similarity and gradation. That is, group मतलब top to bottom हम बात करेंगे. So when we go from top to bottom, example ले लो group 1 की, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम. अब ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट है ये सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है. दीज आर ऑल मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को एक्सेप्शन लेंगे. दीज आर मेटल्स एंड दे शो ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टी. अब ग्रेडेशन मतलब ग्रेजुअल चेंज. इनकी प्रॉपर्टी एज वी गो डाउन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. क्या चेंज हो रहा है? जैसे हम लिथियम से फ्रैंक्शन तक जाएंगे या टॉप से बॉटम में जाएंगे हम देखेंगे इनकी जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो रहा है. That is, it is becoming more metal as we go down. Now, the properties of elements changes slowly while going from one end to other end in a particular period.
जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी स्लोली चेंज होती है. एग्जाम्पल ले लो पीरियड 2. अब लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन. अब ये जो पीरियड 2 है अगर ध्यान से देखें तो लिथियम एंड बेरिलियम मेटल है, बोरॉन मेटेलॉइड है, कार्बन नॉन मेटल है, एंड धीरे धीरे उसकी जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होगी. तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी. शॉर्ट, मेटल धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे नॉन मेटल बन जाएगा, एलिमेंट्स बिकम्स नॉन मेटल. तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ यू डोंट रिमेम्बर तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द distribution of electrons in shells or orbits. जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीकी शेल होता है इसे हम बोलते हैं K शेल and it is numbered as 1. So this is the first shell. Then आता है L which is numbered as 2. Then आता है M, this is third shell. Then आता है N, this is fourth shell. And किसी भी शेल का अगर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट इज 2n स्क्वायर. ओके, अब एग्जाम्पल ले लेते के. अब के क्योंकि ये फर्स्ट शेल है तो एन की जगह पे 1 आ जाएगा. 1 स्क्वायर इज 1, 2 1s are 2. So maximum capacity of K is 2. Maximum capacity of second shell that is L shell is 8 and so on. Okay, एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल सोडियम. अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. Atomic number 11 है मतलब total number of electrons, atomic number is also equal to number of electrons. तो जो total number of electron है वो 11. तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा as 2, 8, 1. फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है तो आउट ऑफ 11 2 चला गया फर्स्ट शेल में, बचा 9. सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है तो सेकंड शेल में गया 8 एंड जो लास्ट में 1 बचा दैट विल बी प्लेस्ड इन लास्ट शेल. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है. Now groups and electronic configuration. Now while going from top to bottom within any group, one electronic shell gets added at a time. So let us take an example of group 17 that is of halogen. अब halogen में 4 example ले रहे तो fluorine, chlorine, bromine, iodine and so on. अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 1. ठीक है, so fluorine has 2 shells whereas chlorine has 3 shells, bromine has 4 shells, iodine has 5 shells. Whereas if you compare all these elements, electronic configuration of all these elements, they have same number of electron in the outermost orbit. That is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अगर हम देखें तो इनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7. From this we can say that the electronic configuration of the outermost shell is characteristic of a particular group. तो outermost shell के जो number of electrons है वो characteristic और बोल सकते हैं specific है वो particular group के लिए. As we go down the group, the number of shell increases by 1. Next आते हैं periods and electronic configuration. Let us understand how electronic configuration differs in periods. While going from left to right within the period, the atomic number increases by 1 at a time and number of valence electron also increases by 1 at a time. Check करते हैं. So let us take an example of third period. The third period has sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and we are not writing the next one that is argon. यहाँ पर हम नहीं mention कर रहे. अगर यहाँ पर हम compare करें या देखें electronic configuration तो सबके पास period में number of shell remain same. Number of shell same है, but number of electron in the outermost orbit increases by 1. Sodium के पास 1 electron है outermost orbit में, magnesium के पास 2 electron है. जो number of valence electron है वो increase हो रहा है by 1 at a time. तो इसको state करेंगे. So in the modern periodic table, electrons are filled in the same shell while going along a period from left to right. And at the beginning of the next period, a new electron shell starts filling up. ठीक है, तो जो next period अगर होगा, suppose अगर हमने fourth period लिया, तो fourth period में
इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ पीरियड में फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. This is all about the groups and periods related to their elements electronic configuration. Now, in the next class, we will be understanding about the periodic trend seen in modern periodic table. I hope you all understood. If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you.